Hello students, welcome to +1 tutorial. So today we will discuss about explanation of line spectrum of hydrogen. In last tutorial we talk about movement of electron from ground state to higher state. So amount of energy is absorbed or emitted when an electron jump from orbit and initial to and final means from ground state is Ni and excited state is Nf. When electron move from ground state to excited state Ni to Nf, then amount of energy is change in energy delta E is equal to EF minus EI. EF minus EI. So formula of energy EF is equal to minus RH upon NF square. RH is Rydberg's constant, Nf is orbital, and E same Ei is equal to minus RH upon Ni square. So putting these values in equation 1, what comes out? Delta E is equal to minus RH final Nf square minus again minus RH upon Ni square. Clear? Minus minus plus, so is equal to minus RH upon Nf square plus RH upon Ni square. So we can write it in this side. RH upon Ni square minus RH upon Nf square. Now we want to find out the frequency. Frequency of electron. Frequency is denoted by nu and formula is delta E is equal to h nu. So keep frequency nu in this side and h in this side. So nu is equal to delta E by h. So put here the value of delta E, this one, and frequency will become R H upon H into 1 by Ni square minus 1 by Nf square. So this is a formula of frequency. This is a formula of frequency. So we can find out the frequency of any electron by this formula. Clear? And energy by this formula. And value of RH, Rydberg's constant, is 2.18 into 10 raised to power minus 18 joule. H is also a constant, that is Planck's constant. Last time we write the value of H, Planck's constant, 6.626 into 10 raised to power minus 34 joule second. So we can find the frequency easily. So firstly put these value in this formula and nu become equal to
2.18 into 10 is to power minus 18 joule, and value of H, Planck's constant, 6.626 into 10 is to power minus 34 joule second, and 1 by Ni square minus 1 by Nf square. So solve this. We get 3.29 into 10 is to power 15. 1 by Ni square minus Nf square. Unit of frequency is hertz. So next is wave number. We want to find out the wave number, is denoted by nu bar. If value is equal to nu upon c. So put the value of nu here. Nu bar is equal to nu की value 3.29 into 10 is to power 15 upon c. 1 upon Ni square minus 1 upon Nf square. Next, here C is the frequency of light, so value of C is equal to 3 into 10 is to power 8 meter per second. So we can put this value in wave number. So wave number become 3.29 into 10 is to power 15 upon 3 into 10 is to power 18, 1 by Ni square minus 1 by Nf square. So solve this. So it become 1.09677 into 10 is to power 7, 1 by Ni square minus 1 by Nf square. Unit meter inverse. Nu bar. So today we solve these three formulas: E in delta E energy, and nu frequency, nu bar wave number. So by using this formula we will solve some numericals. So firstly we will discuss about limitation of Bohr's theory, then we solve numerical problems. So let us start with limitations of Bohr atomic theory. First is Bohr's model of an atom could not account for the finite detail. Finite detail means if two lines come close like this spectra. Finite detail means completely उसके बारे में हमें डिटेल में नहीं बताया. डबलेट और टू क्लोजली स्पेस्ड लाइन के बारे में हमें ज्यादा एक्सप्लेन नहीं किया. किसने? बोहर ने. क्लियर. सेकेंड इज could not explain the line spectra of atom containing more than one electron, means called multi-electron atoms. In Bohr model, we only discuss about n is equal to 1 only for hydrogen, only for one electron, but he could not explain about the line spectra of atom containing more than 2 electron, 3 electron, nothing about that. Clear. Third point is Zeeman effect. Zeeman effect means when an atom, any atom emitting spectral line is placed in magnetic field, each spectral line further split
into number of lines. That is known as Zeeman effect. Clear? But Bohr could not explain about that. So here Bohr theory failed to account for the effect of magnetic field on spectra of atom or ions. Atoms or ions. Clear? Fourth fact is, like magnetic field, Bohr theory also could not explain the effect of electric field. Electric field effect is known as Stark effect. So here Bohr also could not explain about effect of electric field on spectra lines. Next is, Bohr could not explain any clue to explain the shape of a molecule arising out the directional bonding between atoms. Means atoms combine to form a molecule. He could not explain about the bonding between atom. Bonding के बारे में इसने कुछ भी एक्सप्लेन नहीं किया. क्लियर? नेक्स्ट, पाथ ऑफ मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन. Electron is moving in this orbital, but path of electron can't be well defined. कुछ भी इसके बारे में define नहीं किया. So these were the limitation of Bohr's atomic theory. So next are the numerical problems related to energy, radius, velocity. So first is, calculate the energy associated with the first orbit of helium positive. What is the radius of this orbit? So let us solve. Here we have to find out the energy. Formula of energy is equal to En is equal to 2.18 into 10 raised to power minus 18 Z square upon N square Joule per atom. So value of Z is number of electron helium है 2 and charge N is equal to 1 positive. So put this value in this formula. En become is equal to 2.18 into 10 raised to power minus 18 upon N 1 square into Z is 2 square. So solve this. 2 into 2 4. 4 को मल्टीप्लाई कर दीजिए. कितना आ जाएगा हमारे पास? 27.8. Clear? Here is sign of minus. Into 10 raised to power minus 18 Joule. Energy comes out. Now we have to find out the radius of this orbit. So formula of radius, R N is equal to 0.0529 upon Z N square nanometer. And value of N is 1 electron. He positive है. So value of N is 1. Clear? So put this value 0.0529 1 square upon value of Z 2. सॉल्व कर लीजिए. 2 से डिवाइड करके हमारे पास आंसर आ जाएगा 0.02645 नैनोमीटर. So these are very easy numericals. Next देखिए the wavelength of first spectral line in the Balmer series is 6561 angstrom. Calculate wavelength of second spectral line in Balmer series.
In last tutorial, we discussed about the Balmer, Brackett, Pfund or Paschen spectral lines. In Balmer series means when electron jump to the second energy level, then come back to first energy level. It means for Balmer n is equal to 2. Clear? So firstly write down the Rydberg's equation. 1 by lambda is equal to R 1 by n initial square minus n final square. So for Balmer series, n initial is equal to 2, सेकेंड में आएगा, एंड n फाइनल इज इक्वल टू, फॉर फर्स्ट लाइन के लिए देखिए, पहले फर्स्ट लाइन स्पेक्ट्रल के लिए nf की वैल्यू 3, सेकेंड के लिए 4. सो पुट दिस वैल्यू इन दिस. 1 by lambda is equal to 1 by lambda r 1 by 2 square minus 1 by 3 square. Value of lambda is given here. So put this value 1 by 656 1 equal to r 1 by 2 square 4 minus 9. So by solving this it become r 5 by 36 and here 1 by 6561. So write the equation number 1. Second equation is for second line in Balmer series. Second line means n इनिशियल 2 ही रहेगी, एंड फाइनल क्या हो जाएगी हमारे पास 4. सो पुट दिस वैल्यू इन लैम्डा. 1 by lambda is equal to r 1 by initial 2 square minus 1 by 4 square. Solve this. Value become 3 by 16. This is equation number 6. So here we want to calculate the wavelength of second spectral line in Balmer series. So second हमने lambda की वैल्यू क्या करनी है, फाइंड आउट करनी है, this one. So divide equation 1 by second. डिवाइड कर दे हमारे पास, डिवाइड करके दोनों इक्वेशन को, लैम्डा ऊपर चला जाएगा, लैम्डा अपॉन 6561, आर से आर कैंसल आउट हो जाएगा, इसका क्या आ जाएगा इज इक्वल टू 16 by 3 इंटू 5 by 36. इसे सॉल्व कर लीजिए. 4 के टेबल पे कट हो गया, 4 9. अब हमारे पास आ जाएगा लैम्डा इज इक्वल टू 20/27. लैम्डा की वैल्यू को दूसरी साइड ले जाइए, इंटू 6561. सॉल्व करके हमारे पास वेवलेंथ की वैल्यू आ जाएगी 4860 ऑंगस्ट्रॉम. क्लियर? सो बाय दिस मेथड वी कैन सॉल्व द न्यूमेरिकल्स रिलेटेड टू वेवलेंथ. नेक्स्ट एक है द रेडियस ऑफ फर्स्ट बोहर ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम इज दिस वन. फर्स्ट का रेडियस गिवन है, से द कैलकुलेट द रेडियस ऑफ थर्ड ऑर्बिट ऑफ हीलियम पॉजिटिव आयन एंड सेकेंड ऑर्बिट ऑफ लिथियम पॉजिटिव आयन. फर्स्ट गिवन है, सेकेंड हीलियम का फाइंड आउट करना है, थर्ड लिथियम का फाइंड आउट करना है. सो लेट अस स्टार्ट
Write down the formula of radius for nth orbit. Rn is equal to n square h square by 4 pi square mz e square. So for hydrogen means first electron के लिए बोला गया वैल्यू. For hydrogen atom z is equal to 1. फर्स्ट ऑर्बिट है तो n क्या हो जाएगी हमारे पास इज इक्वल टू 1. सो पुट दिस वैल्यू आर एन बिकम इज इक्वल टू एच स्क्वायर n बिकम, सो नो नीड टू राइट डाउन, अपॉन 4 पाई स्क्वायर m. z की वैल्यू ऑल्सो 1 एंड e स्क्वायर. This value of radius is given is equal to 0.529 angstrom. So firstly हम हीलियम के लिए देखते हैं. First is for He positive ion. So value of Z is equal to 2 and वैल्यू ऑफ n इज इक्वल टू 3, क्योंकि हमें थर्ड ऑर्बिट के लिए बोला गया हो. तो सो ऑर्बिट इज थर्ड, सो हेयर वैल्यू ऑफ n इज इक्वल टू 3. सो पुट दीज वैल्यू इन दिस फॉर्मूला. r n मीन्स n की वैल्यू 3 इज इक्वल टू 3 स्क्वायर h स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर m. z की वैल्यू 2 है, e स्क्वायर इंटू 2. सॉल्व करके हमारे पास आ जाएगा 9/2 h स्क्वायर बाय 4 पाई स्क्वायर m e स्क्वायर. Here the value of this h square 4 pi square m e square is equal to 0.529 angstrom. So we can put this value in this formula. So R3 become 9/2 into 0.529. इसे सॉल्व करके हमारे पास आंसर आ जाएगा 2.384 angstrom. Clear? So second part is for lithium 2 positive ion. So value of Z is equal to for lithium 3 and orbit. लिथियम के लिए सेकेंड ऑर्बिट बोला गया है तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास 2. n इज इक्वल टू 2. सो पुट दीज वैल्यूज इन दिस फॉर्मूला. R2 इज इक्वल टू 2 स्क्वायर h स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर m इंटू वैल्यू ऑफ z इज 3 इंटू ई स्क्वायर. सो सॉल्व करके हमारे पास आ जाएगा 4h स्क्वायर अपॉन 3. इसको सेम वैसे ही राइट कर लीजिए क्योंकि हम इसमें वैल्यू क्या कर सकते हैं, पुट कर सकते हैं, ई स्क्वायर. सो इसमें भी रेडियस की वैल्यू क्या कर दें, पुट कर दें, तो हमारे पास क्या आ जाएगा इज इक्वल टू 4/3 इंटू 0.529. तो इसे सॉल्व करके हमारे पास आंसर आ जाएगा 0.7053 angstrom. Clear?
So by using these type of formulas, we can solve numericals related to wavelength and radius. So एक और न्यूमेरिकल देखते हैं. कैलकुलेट द रेशियो ऑफ रेडियस ऑफ सेकेंड ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम एंड दैट ऑफ द थर्ड ऑर्बिट. देखिए फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास रेडियस का. आर एन इज इक्वल टू एन स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर एम. जेड की वैल्यू इसके लिए हाइड्रोजन के लिए 1 है, सो 1 पुट नहीं करेंगे हम. ई स्क्वायर. सो फर्स्टली बोला है फॉर सेकेंड ऑर्बिट वैल्यू ऑफ एन इज इक्वल टू 2 एंड फॉर थर्ड ऑर्बिट value of n is equal to 3. So put in this r2 के लिए क्या हो जाएगी हमारे पास 2 स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर एम ई स्क्वायर. r3 के लिए देखिए जहाँ पे 3 पुट कर दीजिए 3 स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर एम ई स्क्वायर. Now we have to find out the ratio of R2 and R3. So divide R2 by R3. R2 by R3 is equal to इन दोनों को डिवाइड कर दे. क्या रह जाएगा हमारे पास 2 स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर एम ई स्क्वायर. इसको अपोजिट करके राइट कर लेते हैं. 4 पाई स्क्वायर एम ई स्क्वायर अपॉन 3 स्क्वायर एच स्क्वायर. एच स्क्वायर से एच स्क्वायर कैंसिल आउट. ये वैल्यू सेम है सो कैंसिल आउट. पीछे क्या बचा हमारे पास 2 स्क्वायर 4 अपॉन 3 स्क्वायर 9. तो हमारे पास रेडियस रेशियो कितनी आ गई R2 बाई R3 इज इक्वल टू 4 बाई 9. सो वी कैन राइट R2 ratio R3 is equal to 4 ratio